Good morning, class 7th. So, today we start a new chapter and very important and very interesting chapter of your book. The name is Delhi Sultans. Okay. So, in chapter 2, we saw the religions like the Kaveri Delta became the center of the large kingdom. Did you notice that there were no mention of the kingdom with the Delhi as its capital? So that was became the Delhi became an important city in the 12th century. Which century? 12th century. So we talk about the Delhi. Okay, and we talk about the Sultans of Delhi. But in earlier chapter, we learned when the Kaveri Delta and the center of the large kingdom. But we are not mentioned here to you can say there is no talk about the Delhi, especially Delhi. Okay, why? Because Delhi is not a big city at that time. Okay, so the problem is there when we talk about the Delhi. So Delhi emerged in the 12th century, after 12th century we can say. Okay, so now take a look at the table number first. So we have the table number first. So the rulers of Delhi. So in your book also the same page is there in page number 32 31. So Rajput dynasties. So we talk about here the Rajput dynasties. First one, Tomars, early 12th century, 1165. First one is Anangpal. First one is Anangpal. Time period also mentioned here. Chauhans, then 1165 to 1192, the Battle of Tarain, you can say. The last battle of Tarain, yeah, second battle of Tarain. Then Prithviraj Chauhan, here mentioned the Prithviraj Chauhan, the story I recite, I think I told or not. If not, I will. Okay, I will again told about you. Okay, so the big one, that is the Prithviraj Chauhan. Okay, so now, and the battle of 1192, the battle of Tarain, when the Prithviraj Chauhan was defeated by Muhammad Gauri, you can say. Okay, then early Turkish rulers we can learn about in this chapter. 1206 to 1290, Qutbuddin Aibak, Samsuddin Tutmis, Rajia, Ghiyasuddin Balban. Then Khilji dynasty started, Alauddin Khilji. They are the most prominent ruler of that time. Then Tughlaq dynasty started. Okay, and we start now. Ghiyasuddin Tughlaq, then Mahmud Tughlaq and Firoz Tughlaq. Sayyid dynasty Krishka, only one most important ruler there. And Lodi dynasty, Behlul Lodi. Behlul Lodi is there. Okay, and Behlul Sikandar Lodi, and the last one is Ibrahim Lodi. So now in this time we talk about the first Chauhans. Okay, Delhi. How the Delhi became the capital of the kingdom under the Tomar Rajputs. Which one? Tomar Rajput. You can say Tomars are there. Okay, Tomar. So we learn it in earlier also. I mentioned it. Okay, so here is a little bit problem. Tomar Rajputs. Then who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, yeah, also referred to as the Chahmans of Ajmer, where they are Ajmer. There were the Ajmer, there the one dynasty is ruled there. That name was Chauhaniya Chahmans. It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Which one? Commercial center. Okay, commercial center. Fine. Then the Delhi became important commercial centers. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. Coin minted here called Delhiwal had a wide circulation. And in particular, that particular area we can see in Delhi, after the Tomars, we can say the Jain merchants were lived there, and cities became constructed under the reserved, okay, served by temples. Coin minted also here. Which type of coins? They are called Delhiwal.
हैड अ वाइड सर्कुलेशन, और बहुत ज़्यादा वो मात्रा में वो क्या था, सर्कुलेशन उसका हुआ था, ठीक है। सो हम बात करें दिल्ली की। नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल, द कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। सो दिल्ली इज मोर इम्पोर्टेंट कब से हुई, जब से यहाँ पर क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत पर तराइन की लड़ाई की बात कह सकते हैं हम, आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन सेकेंड के बाद, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश किया, ठीक है। टेक अ लुक एट द टेबल नंबर फर्स्ट, अगेन आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टी दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत या सल्तनत या वट एवर वी कैन से। तो हमने वो पढ़ा था, दैट इज तुगलक डायनेस्टी, खिलजी भी था उसमें, सैयद भी था, लोधी भी था, ठीक है। द दिल्ली सल्तनत बिल्ट मैनी सिटी इन द एरिया दैट वी नो now as Delhi. Look at the map first and locate Delhi, Ekhuna, Siri and Jahanpanah. Okay, so here we can say Firozabad also, Firoza Kotla, okay, and Jahanpanah also, or Hauj Sultan, okay, and one more Adilabad, या you can say दिल्ली एखुना, ठीक है। तो दिल्ली, जिसको कई बार आपने सुना होगा कि 7 बार बसी और 7 बार उजड़ी, ठीक है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग रूलर से उसको स्टैब्लिश करवाया, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी हो या फिर तोमर से स्टार्ट किया था हमने, और हम पहुँचे थे कहाँ, लोधी, बहलोल लोधी तक और इब्राहिम लोधी तक। तो नाउ वी कैन मूव इन नेक्स्ट वन। सो फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, अब हम पता करेंगे दिल्ली सुल्तान्स कौन कौन थे, किस तरह से यहाँ पर रूल किया जाता था, और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था, प्लस उसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक। सो दैट इज although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information especially valuable as the histories, तारीख सिंगुलर, तारीख इन प्लूरल, तारीख या तारीख जिसको हम कहते हैं, डेट्स, ठीक है। यानी कि वह पर्टिकुलर समय जिसमें उसको, जो हिस्टोरियंस थे उसमें के इतिहासकार थे, उनको उन्होंने लिखने की कोशिश की, और विच लैंग्वेज, इन पर्शियन, किस भाषा में लिखा, पर्शियन में लिखा था, ठीक है। तो लैंग्वेज कौन सी थी, वो लैंग्वेज थी पर्शियन, ओके। एंड वी हैव वन ए बी सी एंड डी of the picture of how they can make 4 stage of the making a manuscripts. Here is the we can mention. So preparing the paper at first, because that time the paper, handmade paper used there. So राइटिंग द टेक्स्ट, उसके बाद जो राइटिंग किया जाता था, उस पर लिखा जाता, जो स्क्राइब्स होते थे, लिखने वाले होते थे। या मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड एंड पैसेज, जैसे सुना होगा आपने, स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाता था। तो सोने को पिघलाया जाता था और उन अक्षरों को में रखा जाता था, ठीक है। और लास्ट वाला था प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, उसके बाद बुक की बाइंडिंग होती थी, देख सकते हैं आप, एक बुक का आकार उसको दिया जा रहा है, ठीक है। द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्न मैन secretaries, administrators, poets, and country courtiers. Sorry, we both recounted events and advised the rulers on the government, emphasizing the importance of the rule, just rule. Okay, तो ये होते कौन थे, तारीख के जो राइटर होते थे, होते कौन थे, ये अधिकतर मेल ही होते थे, पुरुष होते थे, जो सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करते थे, पोएट्स के रूप में काम करते थे, या दरबारी होते थे, ठीक है। और इनका काम था महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखना, राजा की रूल के बारे में लिखना, कैसे वह रूल करता है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों पर इम्पोर्टेंस वह देता है, जस्ट कैसा है, रूल कैसा है उसका। ऐसा ही एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, द सर्कल ऑफ जस्टिस, कि सर्कल ऑफ जस्टिस कैसे होगा। फ़क्रे मुबरी या मुदाबिर रोट इन द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में लिखी हुई किताब है। अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, वो कहता है कि सोल्जर्स के बिना नहीं रह सकता है। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, बिना सैलरी के सोल्जर नहीं रह सकता है। सैलरी कम फ्रॉम द रेवेन्यू, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, जब टैक्स पड़ देगा, ठीक है, कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंस, बट पीजेंस कैन नॉट पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरियस एंड हैप्पी, जब तक वो खुश नहीं होंगे, उनके पास कुछ देने के लिए नहीं होगा, तो कहाँ से देंगे, ठीक है। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, इसलिए कहा गया कि राजा को क्या प्रमोट करना है, जस्टिस एंड अच्छी गवर्नेंस को क्या करना है, उसने प्रमोट करना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। कीप द फॉलोइंग एडिशन डिटेल्स इन माइंड। फर्स्ट वन, द ऑथर ऑफ तारीख लिव्ड इन द सिटीज मेनली दिल्ली।
हार्डली नेवर इन द विलेज, कभी वो गांव गए ही नहीं, रहते कहाँ थे, वो शहर में रहते थे। तो लिखने वाले जो राइटर्स थे, स्क्राइब्स थे, ठीक है, वो कभी गांव में नहीं गए, दिल्ली में ही रहे और वहीं रह करके उन्होंने लिखा। ठीक है, किस तो इसलिए हम उसको नहीं कह सकते कि इन्होंने जो लिखा होगा वो सही होगा, तो प्रूफ जो इन्होंने दिया है वो सब अच्छा ही हो। दे ऑफन रोड देयर स्टोरीज ऑफ सुल्तान्स इन द होप ऑफ द रिच अवार्ड्स। और ये जो लिखा करते थे, ये सुल्तान से बड़े उपहार को लेने के लिए, या फिर हम कहें कि अगर वो सुल्तान के बारे में अच्छा लिखेंगे तो सुल्तान क्या करेगा, उनको खुश होकर के कुछ उनको रिवॉर्ड देगा। तो ये इनके राइटिंग को हम विश्वसनीय नहीं कर सकते। सो दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स एट द नीड टू प्रिजर्व इन द आइडल सोशल ऑर्डर्स ऑन द बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस, देयर आइडिया वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। तो उनके आइडिया हर किसी के लिए नहीं थे, ठीक है। और प्लस वो बर्थ राइट की बात करते थे, जेंडर डिस्टिंक्शंस की बात करते थे कि मेल का ही बोलबाला ज़्यादा होगा, ठीक है। बर्थ राइट जो होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया गया, जैसे प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन द अकाउंट ऑफ बोथ account of birth, sorry, for example people believed that nobles inherited their rights to govern because they were born in the certain family। तो क्यों ये माना जाता था कि जो बर्थ राइट है उनका, यानी कि अगर उनका जन्म अच्छे नोबल फैमिली में हुआ है तो वो उसी के लिए बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ उनका जन्म वहाँ हुआ है और वो रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। जेंडर डिस्टिंक्शंस जो होते थे, social and biological difference between the women and men, usually the differs used to argue that men are superior to women। तो हमेशा से चला आ रहा है, ठीक है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हम कह सकते हैं यहाँ पर, और मैन को प्रेफर किया जाता था हमेशा कि वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट जो कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन औरतों के प्रति ज़्यादा था, ठीक है। इसी का एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।